वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेटाफोर्स ऑफ आईओटी का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर विल सी द डेटा। ओके, सम पॉइंट रिगार्डिंग द डेटा इन आईओटी। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्राइवेसी एंड सीक्रेट्स का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो उस तरह से डेटा का क्या मीनिंग होता है इन इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी, तो उसका हम आज डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज हुज डेटा इज इट एनीवे। ठीक है, दिस पॉइंट इज रिगार्डिंग द डेटा इन IoT टेक्नोलॉजी. So with one example, it is explained. Okay, with the number of sensors being deployed, so it is not always clear whose data is being gathered, because in IoT project there are number of sensors. Suppose it is a central controller, it will be a your microcontroller. Okay, and to this microcontroller there are number of sensors which are being connected to sense the physical data. Okay, suppose it is a first, second sensor, third sensor. If it is a simple project, so it consists of less number of sensors, but yeah, but it is a complex project, then it requires the number of sensors. Okay, according to the complexity of that project. Suppose sensor 1 is the temperature sensor, sensor 2 is the pressure sensor. Okay, and this is the humidity sensor, for example. Okay, so when temperature sensor will sense the environmental temperature and send its data to the microcontroller. Okay, then pressure sensor will sense the pressure and send its data to the microcontroller. Okay, then third one is the humidity sensor. It will sense the humidity in the air and send the signal to the microcontroller. If this number of sensor will get increased, then for microcontroller it is difficult that whose data to be gathered. ठीक है, मीन्स एट अ टाइम अगर टेम्परेचर सेंसर सेंड कर रहा है डेटा, एट दैट टाइम your humidity sensor will also send the data, pressure sensor will be also send the data, and other sensors will send the data at a time. So at that time it is difficult for this microcontroller to gather that data and process that data and take the decision according to it. Okay, so it is explained with the one example. Consider the case of camera. Okay, deploy in an advertisement hoarding, which can check to see whether people are looking at the different adverts. So does the data belonging to company that install the camera or the number of public who are looking at the adverts? मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग है, विच कैन चेक टू सी वेदर पीपल आर लुकिंग एट द डिफरेंट एडवर्ट्स. ठीक है, तो जो लोग अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. ओके, देन does the data belong to company that install the camera or to the members of public who are looking at the advertise. तो जो कंपनी ने कैमरा इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, दैट इज़ फॉर देयर कंपनी एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, एंड योर पब्लिक मेंबर और पब्लिक आर लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज उस एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग पे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे कंपनी के, दैट कैन बी अ शोन. ओके, next example is Adam Greenfield, a leading practitioner, okay, of urban computing, makes an convenience argument that public space, this data is being generated by public, so they should at least have equal rights to aware of and
हैव एक्सेस टू दैट डेटा। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जो डेटा पब्लिक से जनरेट होता है, मीन जैसे आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आपका जो इन्फॉर्मेशन है, या आप कुछ चैटिंग कर रहे हो, सो दैट डेटा विल बी अ प्राइवेट डेटा। ठीक है, एंड वो डेटा आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, देन दैट पर्सन विल बी अवेयर ऑफ that exchanging of data. Okay, means they have to access their data or the data which is available in पब्लिक डोमेन। ठीक है, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जैसे हम उसे एक्सेस कर सकते हो करते हैं, वैसे जो प्राइवेट डेटा है, मीन्स पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, ठीक है, मीन्स तो वो सबको अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग ये, ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी you can more easily claim that the members of public don't have such a right. ठीक है, but perhaps the property owner might assert the rights to the data rather than whoever install the कैमरा। ठीक है, तो जिस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो उसका ओनर है, ठीक है, तो उसके पास सारे राइट्स रहेंगे एज कम्पेयर टू द जनरल पब्लिक्स और पब्लिक मेंबर। ठीक है, so there are many places such as shopping mall which are all intents and purposes look and feel like public spaces despite being privately owned. How do things stand in those areas? तो जितने भी प्राइवेट शॉपिंग मॉल्स है, तो मैक्सिमम जो मॉल्स है वो रेंटेड है। ठीक है, so it is a general public space. So again, next point is those people to whom the data pertains, or regardless of whether they own the sensor used to gather the data or property where the sensors were sited. तो जो persons है और जो peoples है, when they own the sensor, तो जो सेंसर वो खरीदेंगे या जो प्रोजेक्ट्स है, दैट इज बेस्ड ऑन द IoT, व्हेन दे परचेस इट एंड पुट दैट सेंसर इन द their property. Okay, so the sensors were cited, so there is no clear understanding of what rights if such data subject will enjoy, but it is an area that deserve more debate and attention. तो जो सेंसर वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर वो पुटअप करते हैं, ठीक है, सो इन दैट द डेटा इज़ नॉट सिक्योर और इट विल बी डिजर्व मोर डिबेट एंड अटेंशन। ओके, बिकॉज दैट डेटा इज़ अ प्राइवेट डेटा फॉर सच ओनर। ओके, तो उनका ये प्राइवेट डेटा होगा क्योंकि उन लोगों ने परचेज किया है IoT टेक्नोलॉजी और IoT project, and that sensor will be put in their private property. Okay, जैसे किसी के होम में अगर सेंसर लगाए हुए आउटसाइड एरिया में सेंसर लगाए, जैसे लाइट सेंसर है, इट विल सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अकॉर्डिंग टू टेक द डिसीजन। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रीट लाइट का। ठीक है, तो इस तरह के जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, these are covered under the data. Next is web thinking for connected devices. In this first point is, as a lot of things on planet Earth are reborn to inventory of digital connected web devices, the roles and responsibilities of web developer and technology managers can have to be completed to evolve in keeping pace with the ever increasing list of appliances and gadgets that needed an internet interface. ठीक है, तो जो वेब डेवलपर्स है एंड द टेक्नोलॉजी मैनेजर्स विच आर इन्वॉल्व इन द IoT technology or in IoT projects, so they have a responsibility that more number of appliances and the gadgets are needed to connect through a इंटरनेट, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस पर रिसर्च होगा एंड दे कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ
internet to the IoT technology. So the research area और इन IoT टेक्नोलॉजी विल गेट सक्सीड. ठीक है, तो ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वेब डेवलपर्स पे भी है एंड टेक्नोलॉजी मैनेजर. ठीक है, क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट होगा डेटा कम्युनिकेशन के लिए या डेटा प्रोसेसिंग के लिए, so that requires the web development. Okay, it is a web development part. And second is the technology manager. Okay, with the number of sensors and the actuators which are being involved in the projects. Okay, how they can behave or how the data can be recovered from them. ठीक है, so it is a responsibility of technology managers. ठीक है, so it is a combination of both web developers and technology managers. Second point, the international trend is understood the Internet of Things or IoT, and a vision has impressed that very same premises for the wave of thinking और उसको ही कहते हैं WOT WOT and incorporate similar characteristic and application models. So your IoT is nothing but the wave of things. ठीक है, क्योंकि क्या है उसमें हम जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए विल यूज़ द इंटरनेट. ठीक है, सो थ्रू इंटरनेट द डेटा विल बी ट्रांसफर. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ WOT, दैट इज़ द वेव ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट, the piece can examine the technical options that encapsulate the web of thing, and that I can give samples of current application in use nowadays. Moreover, provide some hopeful prospects for the longer term of the web and things. So these are the different points under web thinking for connected devices. Means how different devices are connected. ठीक है, through the internet, which is nothing but our IoT technology. Okay, so but will involve the web, world wide web in the IoT technology. So how it can be possible? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द वेब ऑफ थिंग. ठीक है, तो वेब ऑफ थिंग एक्चुअल क्या है, जैसे हमने पहले ही एक्सप्लेन किया कि योर वेब ऑफ थिंग इज़ नथिंग बट द और इट इज द पार्ट ऑफ IoT. ठीक है, तो IoT का इंटरनेट ऑफ थिंग का एक पार्ट है वेब ऑफ थिंग्स. So next point is the impact to human and AI. AI means artificial intelligence is another concern, not from simply a viewpoint, however from intellectual, technological and governance view additionally. So तो इसका जो इम्पैक्ट है WOT का, ठीक है, वेब ऑफ थिंग का, to the human and artificial intelligence, it is another concern. ठीक है, as per the point of technological, intellectual and governance point of view. ठीक है, so again it is explained with one example. ठीक है, so it's clear that there are accelerators placed to convert things to changing into a smart web. Okay. Connected devices that create, store and share data. Additionally, these sensible devices will program to create selection supported the it and has created a data from different sources. तो जो simple things है that can be a changing into the smart web connected devices that create, stores and शेयर द डेटा. तो वो डेटा, वो जो डिवाइस है, सिंपल थिंग्स को कन्वर्ट किया हमने स्मार्ट में. ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट, देन इट कैन क्रिएट टू स्टोर एंड शेयर द डेटा. जैसे हमने स्मार्ट लाइट का एग्जांपल लिया था. ठीक है, तो पहले तो स्मार्ट लाइट नहीं थे. ठीक है, जब IoT टेक्नोलॉजी नहीं था. ठीक है, तो दे आर सिंपल थिंग
तो हमने क्या किया, सिंपल लाइट को ही कन्वर्ट कर दिया स्मार्ट लाइट में, सो दैन वी कैन एडजस्ट इट्स ब्राइटनेस, कलर, then we can easily on and off by using a simply application. so simple thing को हमने क्या कर दिया, एक स्मार्ट डिवाइस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड दैट डेटा कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ वेब, दैट इज़ अ थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है. so this is the one example. okay, then technical manager can find out how to integrate their current business model. तो टेक्निकल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ इट कैन इंटीग्रेट देयर करंट बिजनेस मॉडल, मीन्स इंटीग्रेशन विद all the different projects are connected to their single business model, ठीक है. so that is the integration. and internet governance system to just accept the speedy space, ठीक है, as an ancient devices still adopt into the smart class of web enable happiness, ठीक है. तो जो उनके पुराने डिवाइसेस है, ठीक है, सो दैट कैन बी अ मेकिंग अ स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है, तो उनको स्मार्ट डिवाइसेस में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो उसमें कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट चेंज करके दे कैन बी अगेन इंटीग्रेटेड, ठीक है, with the new devices, and the total business model is an IoT technology or uses the an IoT technology, ठीक है. so these are the different points consider for the web of things. तो अभी वेब ऑफ थिंग्स का हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ कनेक्टेड होटल. ओके, मीन्स hotel is connected through a simply a IoT. okay, so in that building, this sensible building system can seamlessly need electronic door lock system by company alpha, security cameras from company beta, and control application in manage all this created by the company gamma. Creating these devices and systems we can work with one another would requires a numerous custom system integration work to be done. मीन्स ये जो होटल है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज है, ओके, देन डोर लॉक्स, सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल, ठीक है, सिक्योरिटी कैमराज, डोर लॉक्स, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू IoT, मीन्स थ्रू अ इंटरनेट दे कैन share its data with each other, means the camera will share the data with the control room, and the doors is also sharing the data in the control room. So it is a totally controlled environment. okay, so creating these devices and systems speak and work with each other, ठीक है. तो ये जो devices है, इसमें जो devices यूज़ होंगे डोर लॉक में, सिक्योरिटी कैमराज में, and control application में, they can speak with each other. okay, मीन्स जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, देर आर डिफरेंट रूम्स इन द होटल. ओके, सपोज रूम 301, 204 and 203, okay, and it is controlled at the centrally. okay, so hotel control center, all the sensors are put in this room. okay, means door lock system, security camera outside the room. okay, so these are connected to the hotel central control room, ठीक है, and so these are the different features available in this simple hotel connected project, ठीक है, that controls the temperature and humidity in the room, ठीक है, because the temperature and humidity sensor is available inside the room, so that according to that humidity or temperature in the room, the AC will be work if it is a AC room. okay, तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, AC will be on when when temperature will be increased, then AC will be on, and when humidity is again
in a controlled environment. Second, turning on off lights. Okay, means जिस तरह से एक्टिविटी मीन्स number of peoples are entered in the room, at that time the lights will be on and off, and again the intensity of light can be adjusted according to the daylight conditions. So these are the different things which can be automatically controlled by using the your internet of things. So that is the one of the example how the web of things will be used, which is the part of an IoT. Okay, तो आज का वीडियो लेक्चर यही एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ एग्जांपल लेंगे रिगार्डिंग द IoT प्रोजेक्ट्स. ठीक है, सो थैंक यू.